So welcome viewers to the platform of News Radar. Today we are going to discuss an issue related to Deputy Speaker of Himachal Pradesh Legislative Assembly. As Deputy Speaker Hans Raj is again in limelight for a recording that is going viral in the state and social media platforms where a principal is being threatened by the caller who is claiming himself to be a deputy speaker. The caller is seeking admission of his relative son in school. But on the denial of the principal, the caller threatened to make his transfer to Kabul Kandahar in Afghanistan. We were trying to contact Hans Raj, but his number was switched off. But finally, we got his version, and you can listen what he told to us on this. We will listen his version, and then we will start this debate. ये बहुत बड़ा मसला हो गया है और उनकी बहुत बड़ी फीसें हैं। ये तो भारत सरकार से भी हम टेकअप करेंगे कि जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इसमें ये अपने वायदों से मुकर रहे हैं और ऊपर से हर बंदे के इतने नॉनसेंस तो मेरे साथ करी है। आम जनता तो दरवाजे पे नहीं जा सकती। तो ऐसे बुरे हालात हैं इनके, तो ये तो बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा, है ना जी। वो हमने तो उस टाइम दबा दी थी पर अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। ये तो कंपनी की रिकॉर्डिंग साल की है कि मुझे लगता है ये पिछले साल का है, इस साल तो नहीं है। मुझे याद नहीं है मैंने कब बोला। So this school is working like East India Company, and he is going to start a big revolution in his area on this issue. So to discuss more on this, we have with us Mr. Pradeep Nair, who is Dean, School of Journalism, Mass Communication and New Media at Central University of Himachal Pradesh. Rajinder Rana, Congress working president, was to join us, but he was engaged in some program, so he may join us in between. And we have with us Mr. Virender Chaudhary, who is secretary in BJP Himachal. So we would like to ask, first of all, Mr. Virender Chaudhary, that he is also in the politics, and he is in his constituency these days. So I like to ask Mr. Virender Chaudhary, क्या कि आजकल के समय में भी पॉलिटिशियंस को ऐसी जरूरत पड़ती है कि उनको ऑफिसर से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, HAS ऑफिसर से अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का काम करने के लिए? थैंक्स। पहले तो आपने स्टूडियो में बुलाया, थैंक यू। मुझे लगता है कि पहले तो आई वाज डाउटिंग कि दिस इज ये जो इन्होंने बोला है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत सी चीजें देखने मिलती हैं, वो कई बार रेयर होती हैं, फेक होती हैं। अभी कुछ दिन पहले, अभी थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया में लिस्ट हमें देखने को मिली, लगा वो फेक है। तो आई थिंक आपने अभी जो स्टेटमेंट मैंने सुनी है, आफ्टर लिसनिंग टू द स्टेटमेंट, आई थिंक वो उन्होंने जो कोई बात हुई है, वो वैसे तो बता रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैंने कब बोला है, कब 1-2 साल पहले की स्टेटमेंट हो सकता है उन्होंने बोला भी हो, लेकिन अगर बात की जाए तो प्राइमरली जो सबसे पहली बात बनती है, वो बात यह है कि एक तो प्रिंसिपल साहब के पास किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का फोन आ सकता है। एनी रिप्रेजेंटेटिव जो चुना हुआ व्यक्ति है, एनी रिप्रेजेंटेटिव कैन कॉल प्रिंसिपल एंड आस्क फॉर द फेवर और मे बी फॉर द एडमिशन इफ ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव और इवन इफ ही इज अ पेरेंट्स। लाइक इसने बोला कि मेरा भतीजे हैं, तो वो पेरेंट्स की तरह भी एक्ट कर रहे थे वहां पे। दिस इज वन। सेकंड, अगर उन्होंने उसमें कुछ अनएथिकल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड इज, अगर उन्होंने कॉल किया है तो उनको किसी भी कॉल को इस तरह से रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक दिस इज एथिकल। ही शुड नॉट रिकॉर्ड द कॉल्स, वन। सेकंड, थर्ड, अगर उन्होंने रिकॉर्ड किया भी है तो आई डोंट थिंक ही शुड मेक दिस कॉल पब्लिक। बिफोर मेकिंग इट पब्लिक, ही शुड अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो आई थिंक ही शुड गो टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। अपने सीनियर से बात कर सकते थे। ही कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, एनीवेयर ही कैन गो, बट मेकिंग इट अ पब्लिक इज, आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट। सो आई थिंक मेरा ओपिनियन तो इस पे यही है। And I will like to ask Mr. Pradeep Nair now, that he is also working in education sector and employee of central government. और ये जो प्रिंसिपल जिनको थ्रेटनिंग कॉल की गई थी और जिसने कहा है कि थ्रेटन कर रहे हैं, जो भी इशू चल रहा है, ही इज ऑल्सो प्रिंसिपल इन केंद्रीय विद्यालय इन चंबा डिस्ट्रिक्ट।
So my question to Pradeep sir is that you are also teaching journalism in Central University and आप रूटीन में सिस्टम से भी इन टच रहते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आउटसाइड द गवर्नमेंट्स. तो हाउ एथिकल इट इज और अभी जो करंट पॉलिटिक्स है आजकल की मॉडर्न पॉलिटिक्स है क्या उसमें भी ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी सर? Am I audible, Gopal? Yes, sir, you are audible. Yeah, am I audible? Yeah. Yes, sir. See, Gopal, the very first thing, I 100% agree with what Mr. Chaudhary has said. That one, whether this call is authentic, whether the recording is authentic, because these days, lot of fake news is there, surfacing everywhere. So one is that whether this call is authentic, number one. Number two, in what context? Because when you listen a small part of a clip, you will never come to know the real context of it. So whether in which context and what is the contextual understanding of this call, that is very important to know. And the third one, that how much, even a public representative, how much he can interfere in the admission process of an academic institution. That is something which I hope that which we are going to debate here. So that we have to look into, because one, that what actually he is saying to the principal, and then the second thing, how the principal is taking it, and then how the principal is further interpreting it, and and how this whole recording is coming out on public domain. So there are some serious concerns. So my understanding is that we have to look into a deeper part of it rather than just looking at the surface. Okay. So we have with us our former editor of Times of India, who was heading Punjab, Haryana, Himachal earlier, Mr. Sanjeev Ratan Singh. So am I audible, sir? Sanjeev sir? I think he is somewhere in a noisy place. I will ask a question to Mr. Virendra Chaudhary, sir. This is not the first time that such recording has come up, or this Hans Raj has landed in a controversy. So BJP is known to be a disciplined party, and they are very strict. Sometimes we have seen in a Modi and Amit Shah era. So whether any action will be taken by the party on Hans Raj or not, sir? Whether party is considering it or not? See, it's not a point of action. Mr. Pradeep came up with a question that whether a government representative should interfere, and what should be the how much he should interfere. So that is again I agree with him. That is a a question for the debate. So I think any representative, he in the very beginning he used the word, is there any management quota, is there any chairman's quota, or this and that quota. He used all these words. He tried to make it very normal in the beginning. Principal started behaving little bit arrogant, and he started with the other words which I heard. So I think he was not wrong there. In the beginning, both of them were very. The beginning he used, and the later he used. Later on, when the principal becoming little bit arrogant, then there is a story which we heard. I don't think thoroughly जैसे कि बात की जा रही है सोशल मीडिया में, he is not very much, बोल नहीं सकते कि वो इतना गलत है, पर हाँ जहां तक आप बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिनरी दिस एंड दैट एक्शन, तो बिफोर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दोनों तरफ से गलती कहाँ पे है, गलती कितनी है. डिसिप्लिनरी एक्शन तो वहां लिया जाता है, और ये मुझे तो लगता है दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी व्हिच इज गोइंग अगेंस्ट बीजेपी, बिकॉज he himself doesn't know whether this recording happened a year back or 2 years back. So this is again a kind of conspiracy which has come up right now. He can, if it is 2 years back, he would have come up with this recording, but why this recording is coming right now? Because it's election time. So again, this is, I think, this is a part of a conspiracy. So Pradeep sir, you are also a government employee. What is the right with the government employee when such things happen कि अगर आपको कोई धमकाता है सिस्टम में,
So what right you people have? You have to unmute your mic, sir. Because uh, you know, certain times, the question is raised in Parliament and in Assembly also regarding the admission system, or on what basis the admission has been made, or sometime we receive queries from government representative also about the admission process. So if we take the query in that way, then it's a routine. It's routine. It is not something quite unusual. The question is that whether any representative is pressurizing the institution for admission in a specific case, that is something different. But in this whole recording, I agree with what Mr. Chaudhary has said, that in the recording initially, we have to look into the pre-test and post-test both. Up on the basis of a particular, a part of clip, you can't make a judgment. For example, whether he is asking a favor and whether he is threatening, the principal or something, it is not quite clear. It is not quite clear. But if it is a query, and if it is a query about that whether there is, a scope for a management quota seat, or whether there is, some kind of seats are lying vacant under a particular category, then I think it is not something to make a hue and cry. So I think, sir, we can. You are very right. We can't make a judgment against anyone on basis of this a simple recording. And we tried Congress leaders also to. We approached them to join this debate, but unfortunately, some couldn't join due to their busy schedule. They are campaigning in public. But we are thankful to Mr. Virendra Chaudhary who dared to come up from the on the behalf of BJP to debate on this, and we are thankful to you also, sir, to participate in this debate. Thank you so much, sir. So we have with us a Congress leader from Chamba district, Advocate Surjit Sharma Bharmori, who is Chairman Research Department of Himachal Pradesh Youth Congress. Bharmori ji, welcome to the platform of News Radar, and we were talking about the recording that has gone viral, और हमने डिप्टी स्पीकर हंस राज जी से भी बात की थी. उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी है और स्कूल जो भी है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है, और अब वो एक आंदोलन शुरू करेंगे कि चीजें यथातथित अपने स्थान पर वो ला सके. तो इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए पुरी जी, मैं आपको इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में विस्तृत से बताना चाहता हूं. ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं डॉक्टर हंस राज जी. वो खुद शिक्षक रहे हैं अपने आप में. जब वो विधानसभा में एंटर नहीं हुए थे, वो खुद अपने आप में एक शिक्षक के रूप में सेवाएं दे चुके हुए हैं. और जिस तरीके से उन्होंने जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है और जिस तरीके से प्रिंसिपल के साथ वार्तालाप किया है, जो बिल्कुल निंदनीय है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस इसका विरोध करती है. और जिस तरह से प्रिंसिपल को ये कहा गया कि ये एडमिशन अगर नहीं कर पाए तो आपको काबुल से कंधार भेज दिया जाएगा. अध्यापक अपने आप में एक ऐसा प्रोफेशन है जो चाहे वो राष्ट्रपति रहे हो, चाहे वो डिप्टी स्पीकर ही क्यों नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी एक शिक्षक से पढ़ करके आगे बढ़े होते हैं. तो जिस तरीके से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इस तरीके का जो उनका बयान और जो ऑडियो वायरल हो रही है, उससे पूरे प्रदेश व देवभूमि शर्मसार हुई है. मैं यही मांग करता हूं कि भाजपा पार्टी स्तर पर व विधानसभा स्तर पर इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. और देवभूमि का जो सिर नीचा हुआ है, इस तरह से कभी भी नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि एडमिशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा तो हम केंद्रीय हाईकमान से बात करके इसको एंटर करवाएंगे. देखिए, इस तरह से भाजपा की जो एक तरफ से कहते हैं कि भाई राम राज्य हम स्थापित करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ से ये गुंडा राज जिस तरीके से डरा धमका करके एक शिक्षक को जिस तरीके से डराने की बात हो रही है, ये बहुत निंदनीय है. और अभी मैं सीधे तौर पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से ये कहता हूं कि अगर आप में हल्की सी भी नैतिकता बची हुई है तो विधानसभा का जो एक संवैधानिक
पद है उसको देखते हुए, और पार्टी में अगर आप कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, आप अगर राम राज्य की बात करते हैं तो धरातल पर भी उसके ऊपर काम होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हंसराज जी को तत्काल प्रभाव से डिप्टी स्पीकर से पद से हटना चाहिए, और साथ में ही भाजपा को इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जी भरमौरी जी, हमारे साथ अभी बीजेपी के भी स्टेट सेक्रेटरी जुड़े थे मिस्टर वीरेंद्र चौधरी, और उन्होंने ये बात कही थी कि ये एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। और हमने हंसराज जी से बात की थी, उन्होंने कहा कि इनको पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग कब की है, शायद पिछले साल की है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी है ये, जो इस टाइम पे रिकॉर्डिंग सामने आई है, और प्रिंसिपल को ये रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी, और उसको अपने आला अधिकारियों को, अगर उसको धमकाया गया है तो अपने आला अधिकारियों को बताना चाहिए था। देखिए पुरी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि षड्यंत्र है। षड्यंत्र एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है। माननीय स्पीकर साहब का जो बिहेव स्कूली टीचर के साथ, स्कूली शिक्षकों के बच्चों के साथ, पहले भी एक थप्पड़ कांड जो है बहुत मीडिया में भी हर जगह उछला हुआ था। और भाजपा के लोग अब ये किस तरह से कह रहे हैं कि एक ऑडियो किस तरह से षड्यंत्र हो सकता है, ये तो माननीय प्रिंसिपल साहब ने उस समय ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, वरना इनकी जो जिस तरीके से मिसबिहेव है एक शिक्षक के साथ, वो सामने नहीं आता। और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राम राज्य की बात करते हैं, तो आप राम राज्य को स्थापित करिए, लेकिन जो गलत चीज है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश ना करिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहता हूं, आप सभी ये जानते हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है भाजपा के नेताओं द्वारा पूरे प्रदेश में की जा रही है। कभी कहते हैं कि ये हल्का सा मामला हो गया, कभी कहते हैं किस तरीके से। और जहां तक शिक्षक के साथ जो प्रिंसिपल हैं, राजस्थान से आकर के यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मैंने फिर से दोहराता हूं कि चाहे वो राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे डिप्टी स्पीकर या स्पीकर ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो भी एक शिक्षक के छात्र रहे होते हैं। और इस तरह से गुरुजनों का अपमान करना कितना सही है, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। जी भरमौरी जी, वहां पे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, क्या वो इन प्रिंसिपल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, और क्या उन्होंने जानना चाहा है कि ये स्कूल जो है वो कहां पर है? देखिए पुरी जी, मैं खुद बताता हूं, ये केंद्रीय विद्यालय इकलौता केंद्रीय विद्यालय है चंबा जिला का, और ये चंबा में क्रिया में स्थित है। जैसे ही हमने इस तरह की मीडिया व सोशल मीडिया की तरफ से हमें ये ऑडियो मिला, तो हमने अपने स्तर पर, पार्टी स्तर पर इसका खंडन, और इसका जिस तरीके से भाजपा का चाल और चित्र सामने आया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में माननीय जो स्पीकर हैं उनके आवाज का भी घेराव करेगी, और भाजपा के नेताओं का घेराव किया जाएगा। धन्यवाद भरमौरी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।